Hello students, a very fresh and good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. So students, we have completed the diamond maker, that is section 1 from unit 5. We are not going to take section 2, that is the feathered friends, for our term 2 syllabus, and the poem, the choice, I would be doing it afterwards after completing section 1 of unit 6. Red-headed league, section 1 from unit 6, that is beyond the veil. Now this chapter has already been started in the previous class, and that's why I'm going to continue in the video also. So let's see what this chapter is all about. The Red-Headed League is a story where the main character is the detective named Sherlock Holmes. Now let's see who is Sherlock Holmes. It is a fictional private detective created by British author Sir Arthur Conan Doyle, referring to himself as a consulting detective in the stories. Holmes is known for his proficiency with observation, deduction, forensic science, and logical reasoning that borders on the fantastic, which he employs when investigating a case of a wide variety of clients from including Scotland Yard. So now Sherlock Holmes is a very famous fictional character. It's a fictional, that means it's not in reality, it's a fictional character, and it is and he is a famous detective. Okay, so here in this story, let's see who are the characters over here. We have Sherlock Holmes, who is the main character, you can say. He is the famous detective. Then we have Dr. Watson. He is the doctor and also Sherlock's friend, who normally goes along with him whenever he goes for an investigation of a case. James Wilson, he is a red-haired shopkeeper, and that is a client over here, जिसके लिए Sherlock Holmes काम करेंगे. ठीक है, James Wilson. And Vincent Spaulding, he is Wilson's assistant. That means the helper at his shop. And he is also known as John Clay. Now we would come to know who is John Clay in the end of the story, not right now. And Duncan Ross, he is Spaulding's accomplice, a man with red hair. That means accomplice means a person, you can say, who is also a friend of Vincent, and he helps him in doing crime. Okay, he helps him in committing crime. And Mr. Jones, he is a detective from Scotland Yard. That is the name of place in London. And he is a detective from police force. Okay, that means वो पुलिस में है और detective का काम करते हैं. Okay, so these are the characters. You need to remember the characters so that you can understand the story. Now let's start the scene. 1, page 138. Let's see. Sherlock Holmes and James Wilson are sitting in Holmes' study, and Holmes has newspaper Morning Chronicle in his hand. So the story begins in the Sherlock Holmes house, where they are both of them are sitting in the study room. Who is sitting? Sherlock Holmes and James Wilson, who is the client. Okay, they both are sitting in the study room, and Holmes is having a paper named Morning Chronicle in his hand. Now Holmes is reading the paper, reading from a newspaper. That means there is something kind of advertisement given over in the paper, and he is reading that. To the Red-Headed League, there is now a vacancy which entitles a member of the league to a salary of £4 a week for purely nominal services. All red-headed men who are sound in body and mind above the age of 21 are eligible. Apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the offices of the League. 7 Pope's Court, Fleet Street, London. So in the newspaper there is an advertisement, और किसको एड्रेस किया गया है इधर? To Red-Headed League. That means there might be a kind of committee or
team which is working for red-headed people. That means the people who are having red hair. And there is a vacancy over there in that league which entitles a member of the league. Entitles means it gives the right to claim the job or to claim the salary of £4 a week for purely nominal services. Nominal means बहुत ही कम या बहुत ही छोटा सा काम है जिसके लिए उनको £4 a week मिलेगा. Now who all would be eligible for this job? All red-headed men. ठीक है, जिसके भी सर के बाल रेड है, जिसका भी सर रेड है, सर का मतलब हेड के बाल, ओके, नॉट द होल फेस. तो जिसके भी बाल रेड है, all those men and those who are sound in body and mind, that means those who are healthy, okay, sound in body and mind, that means they are healthy and above the age of 21. All those red-headed person are eligible for red-headed league, okay. And if they want to join the red-headed league, they need to apply in person. That means they need to go and personally meet Duncan Ross at 11 o'clock on Monday at the offices of league. और ये league की office कहाँ पर है? 7 Pope's Court, Fleet Street, London. So that is the address. Now, Holmes to Wilson. Most interesting Mr. Wilson, most interesting. मतलब ऐसी ad उसने पहले कभी नहीं देखी. So somewhere he is in, he's surprised and he is little bit shocked कि ऐसी भी advertisement होती है जिसमें सिर्फ रेड बाल वाले लोगों को ही हेल्प मिलेगी, राइट, ऐसा कुछ मतलब लिखा हुआ है इसमें एंड इट्स इन न्यूज़पेपर सो इट माइट बी राइट. नाउ द डोर ओपन्स एंड वॉटसन कम्स इन. नाउ वॉटसन इज एज यू नो ही इज शर्लॉक्स फ्रेंड, राइट. वॉटसन, Holmes, I'm sorry, I did not know. Holmes, come in, Watson. This is Mr. Jabez Wilson. He comes with a very interesting problem. Mr. Wilson, Dr. Watson has accompanied me on many investigations, and you can speak freely in front of him as you do with me. Will you tell your story again for Dr. Watson? Give him the advertisement to read. Wilson gives the newspaper to Watson. So Holmes introduced Watson to Mr. Japes, and he also introduced Mr. Japes to Mr. Watson. He said that he told Watson that Mr. Japes Wilson has come along with an interesting problem. And he also let Mr. Japes Wilson know that Dr. Watson has always accompanied him on many investigations. That means Dr. Watson always came along with Sherlock Holmes whenever he went for an investigation. So he said that you can speak freely in front of him, just like you said everything to me. Please tell your story again to Mr. Watson. Given him the advertisement and give him the advertisement to read. And so Mr. Wilson handed over that paper which Holmes was reading before, right? वो मॉर्निंग क्रॉनिकल जो पढ़ रहे थे Holmes, वही पेपर उन्होंने Watson को दे दिया. Holmes to Watson. You can tell, no doubt, that our client has been to China, has done quite a bit of writing lately. So Holmes said that if you see Mr. Wilson, उनको देख के पता चलता है कि our client has been to China. That means he has visited China recently and he has also done quite a bit of writing lately. मतलब काफ़ी सारा लिखने वाला काम, मतलब writing work किया हुआ है उन्होंने. If you see at him, you can make it out. So Wilson was quite shocked. How did Holmes come to know about this? So Holmes said that you have a tattoo of a fish with pink scales on your right wrist that indicates a process particular to China, and that Chinese coin dangling from your keychain provides further evidence. So Holmes ने उनको explain किया कि how come he came to know कि वो China गए हुए थे, that from a tattoo that he was having on his right wrist. Wrist के ऊपर एक tattoo बना हुआ था
किसका था, फिश का था, विथ पिंक स्केल्स, एंड दैट इज पर्टिकुलरली डन इन चाइना. और वो जो कॉइन उनकी की चेन से लटक रहा था, विच वॉज हैंगिंग along with his keychain, that provides further proof that he has been to China. But Wilson said, but the writing, how did you come that I was doing some writing work? So Holmes again explained that why your right cuff is very shiny as compared to your left one. And the left one has a smooth patch near the elbow where you rest it upon the desk. सो उनका जो राइट कफ था वो शाइनी था, और लेफ्ट कफ जो था, लेफ्ट कफ मीन्स द बटन विच इज़ एट द एंड ऑफ द शर्ट, राइट. जो जैसे आपका कॉलर होता है वैसे ही आपके रिस्ट के पास, जो मैन का रिस्ट होता है वहाँ पर बटन होते हैं, राइट, टू क्लोज इट, एंड दैट इज़ कॉल्ड कफ. सो उनका जो राइट कफ था दैट वॉज शाइनी एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन, मतलब लेफ्ट वन थोड़ा डल हो गया था. एंड द लेफ्ट वन वॉज ऑल्सो हैविंग अ स्मूथ पैच नियर द एल्बो, बिकॉज वेन वी राइट वी रेस्ट अवर हैंड ऑन द टेबल, राइट. जब भी हम लिखते हैं हमारा हाथ डेस्क के ऊपर रहता है ना, तो वो एल्बो के पास से जो जगह थी वो स्मूथ हो गई थी, मतलब वहाँ पे वो पता चल रहा था कि दैट पार्ट इज़ बीइंग यूज्ड अप. ठीक है, तो वो पता चल रहा था, उस वजह से उनको पता चला कि विल्सन हैड बीन डूइंग राइटिंग वर्क. सो विल्सन वॉज क्वाइट अम्यूज्ड. ही सेड यस दैट्स राइट. नाउ वॉटसन पुटिंग अवे द पेपर, ही केप्ट द पेपर एंड ही सेड इट्स वेरी स्ट्रेंज इंडीड. So when after reading the advertisement in the paper, he said it's quite strange, it's weird. Who gives this kind of advertisement, right? कि सिर्फ headed person को ही job मिलेगा, एंड वो भी कुछ काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको 4 पाउंड मिलेंगे एवरी वीक. सो दैट वॉज वियर्ड फॉर होम्स ऑल्सो एंड फॉर वॉटसन ऑल्सो. नाउ विल्सन लुकिंग एक्साइटेड, इट इज स्ट्रेंज इजंट इट, डू यू सी द डे एंड द मंथ ऑफ द न्यूज़ पेपर. So Wilson asked Watson to see the day and the month of the newspaper. And what was the day and the month? It's the Morning Chronicle of 27 April 1890. That is 2 months ago. So right now when Wilson came to Holmes, Sherlock Holmes, it was almost 2 months after the advertisement was released in the paper. Okay, मतलब वो काफ़ी पुराना पेपर था, 2 महीने पुराना पेपर था, ठीक है, जिसके अंदर ये एड दी हुई थी. नाउ होम्स रिक्वेस्ट मिस्टर विल्सन टू टेल अबाउट हिमसेल्फ. टेल अबाउट योर सेल्फ मिस्टर विल्सन. सो विल्सन स्टार्टेड, I own a pawn shop at 6 Coburg Square. It's a little shop and it does not make much money, but I have enough to go on. I have an assistant, Vincent Spaulding. It was he who called my attention to this advertisement. Well, I didn't know what to think. So Wilson ने अपने बारे में बताया कि उनकी एक pawn shop है. Pawn shop means a shop where you can keep your object, keep your things or articles, and you can get the loan on interest against that deposit. Okay, कुछ डिपॉजिट करके कोई भी आपकी जैसे कि ऑर्नामेंट्स है या फिर प्रॉपर्टी है आपकी, या आपके पास कोई एंटीक चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप रख के उसके ऊपर लोन ले सकते हो. सो ही ओन्स दैट शॉप. इट्स अ लिटिल शॉप और वो इतने पैसे भी नहीं बनाते हैं उससे. ही कांट मेक मच मनी बट ही हैज़ इनफ टू गो ऑन. दैट मीन्स उन्होंने सेव करके रखा हुआ है, सो इट्स ओके फॉर हिम. एंड ही ऑल्सो हैज़ एन असिस्टेंट नेम विंसेंट स्पॉल्डिंग. और फिर उन्होंने बताया कि इट वॉज विंसेंट जिसने ये एडवर्टीज़मेंट पहले देखी थी. सो हु सॉ दैट एडवर्टीज़मेंट फर्स्ट? विंसेंट स्पॉल्डिंग, जो उनका असिस्टेंट है, उसने सबसे पहले ये एडवर्टीज़मेंट दिखी. एंड देन ही ड्रू हिज अटेंशन टूवर्ड्स विल्सन, और फिर उसने ही विल्सन को ये एडवर्टीज़मेंट दिखाई थी. एट दैट टाइम ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. विल्सन को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए इस चीज़ का. नाउ होम्स ने उसको बोला, टेल मी लिटिल मोर अबाउट योर असिस्टेंट. सो होम्स ने कहा कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर असिस्टेंट. सो विल्सन डिस्क्राइब्ड हिज असिस्टेंट. व्हाट डिड ही से? कि ही इज स्मॉल, स्टाउट बिल्ड, very quick in his ways, no hair on his face, though he is not short of 30. Has a white scar upon his forehead. He is a good worker.
I couldn't afford an assistant, but he agreed to work for half wages. I couldn't find a smarter assistant. He spends a lot of time in a cellar of the shop, where he develops his photographs. He told me he was an amateur photographer and that he needed a place that was dark to develop his negatives, but it doesn't bother me. सो विल्सन ने उसको बोला कि उन्होंने अपने असिस्टेंट को डिस्क्राइब किया. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज स्मॉल एंड स्टाउट बिल्ड. दैट मीन्स ही माइट बी लिटिल बिट फैट. यू कैन से द बिल्डअप इज हैवी एंड ही वॉज वेरी क्विक इन हिज वेज. दैट मीन्स द वे ही यूज टू कम्प्लीट हिज वर्क. उसके फेस पे कोई बाल नहीं है. नो हेयर ऑन हिज फेस. मतलब बियर्ड या मुस्टैच कुछ नहीं रखता होगा वो. दो ही इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ 30 एंड ही माइट बी ओल्डर. मतलब he might be older, he might be around 30 plus something, and he has a white scar. That means a mark. कभी कुछ लग जाने की वजह से you get a mark on your face or on any part of your body, and that doesn't go away. It remains there forever, lifetime. That is called scar. तो उसके forehead पे एक white scar है. He is a good worker. That means he does his work properly. And he added कि वैसे तो he don't earn much money, right? विल्सन ने पहले ही बताया कि he doesn't earn much money from his shop, so he can't afford an assistant. लेकिन ये जो विंसेंट है, he agreed to work for half wages. मतलब आधी सैलरी में काम करने के लिए वो रेडी था. And I couldn't find a smarter assistant, so he thought that he is smart and he is ready to work for half pay. Then why not? And that's why he hired him. Now what does he do? He spends a lot of time in the cellar. Cellar is a room below the ground floor. Ground floor होता है, उसके नीचे basement होता है, right? तो वो basement जो है उनका शॉप का, उसको cellar कहा जाता है. वहाँ पे वो अपने photographs develop करता है. To develop the negatives, he need a dark place. So he goes there. He spends a lot of time over there. And he also told Wilson that he is an amateur photographer. Amateur मतलब he has just started working on it. He's still in the process of learning, and that's why he doesn't earn money out of it. That he doesn't do that work professionally, right? और उसको कुछ जगह चाहिए थी जहाँ पे वो अपने negatives develop कर सके. And Mr. Wilson didn't have any problem. He didn't bother about it. He said, okay, it's totally fine until unless you are doing your work. उसका जो शॉप का काम है वो ठीक से कर रहा है, तो उसको सेलर में जो करना है वो करे. क्या फ़र्क पड़ता है, right? Now Holmes said, Wilson, well, he showed me the advertisement and told me that this league was set up to help red-headed men. He said that I should not let such an opportunity pass. After some thought, I agreed. On Monday, he accompanied me to that address where we met Mr. Duncan Ross. Upon seeing me, Mr. Ross was very excited and told me that I met all the requirements of the job. I was old enough. My hair was the right color. So Wilson said कि विंसेंट ने ही उसको एडवर्टीजमेंट दिखाई, राइट? एंड उसने कहा कि दिस लीग हैज़ बीन सेटअप टू हेल्प रेड हेडेड मैन, जैसे कि विल्सन के बाल थे, राइट? एंड ही सेड दैट आई शुड नॉट लेट सच एन अपॉर्चुनिटी पास. दैट मीन्स आई शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड अर्न मनी. एंड आफ्टर सम थॉट विल्सन ऑल्सो सेड ओके, इट्स फाइन. तो फिर मंडे को वो लोग गए साथ में. ही अकम्पनीड मी, मतलब विंसेंट उनके साथ गया. He went along with Wilson to that address where he met Mr. Duncan Ross. Now as we know that Duncan Ross कौन है? विंसेंट का फ्रेंड है. लेकिन अभी विंसेंट का फ्रेंड है, लेकिन विल्सन को पता नहीं था उस चीज़ के बारे में. Upon seeing me, Mr. Ross was very excited. जब उन्होंने विल्सन को देखा, Mr. Ross was excited because Mr. Ross was also having red hair. ठीक है, ये जो रॉस है उसके भी बाल कैसे है? रेड है. और अभी ये विल्सन जो उसको मिला उसके भी बाल रेड है. इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब. कौन कौन सी रिक्वायरमेंट? एक तो तुम 21 से अबव हो, तुम्हारे बाल राइट कलर के मतलब रेड है, एंड यू आर साउंड मतलब यू आर हेल्दी. सो यू हैव मेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड द जॉब इज़ योर्स. सो होम्स ने उसको पूछा, व्हाट डिड योर जॉब इन्वॉल्व? So Wilson said, I was to be in the office between the hours of 10 in the morning and 2 in the afternoon each day and not leave for any reason.
Mr. Spaulding said that he could attend to the business for this short period. Well, I asked what I was to do. I could use an extra £4, you see. Mr. Ross told me that I was to copy the encyclopedia. Holmes, copy the encyclopedia? So Wilson ने उनको बताया कि उसका काम क्या था. First of all, he said that he has to go to the office. मिस्टर रॉस के ऑफिस जाना है. वो लीग की ऑफिस है जो. और कितना टाइम है? मॉर्निंग 10 को जाना है एंड आफ्टरनून 2 o'clock ही कैन लीव. राइट, बट उसके बीच में कोई भी रीज़न की वजह से ही कैन नॉट लीव द ऑफिस. और उनका जो असिस्टेंट है मिस्टर स्पॉल्डिंग, ही सेड दैट ही वुड अटेंड द बिजनेस फॉर दिस शॉर्ट पीरियड. सो विल्सन ने उनको पूछा मिस्टर रॉस को कि व्हाट आई हैव टू डू. एंड ऑब्वियसली अगर £4 मिल रहे हैं तो इट्स गुड, इट्स एन एक्स्ट्रा £4, राइट. सो ही वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट. और मिस्टर रॉस ने कहा कि यू नीड टू कम एंड कॉपी द एनसाइक्लोपीडिया. तुमको एनसाइक्लोपीडिया में से कॉपी करना है. नाउ अभी एनसाइक्लोपीडिया जो डिक्शनरी जैसी होती है उसको कॉपी करने का क्या मतलब है, राइट? इट्स ऑफ नो यूज़. द जॉब इज़ ऑल्सो स्ट्रेंज, दे आर गिविंग मनी, सो समथिंग वॉज फिशी ओवर देयर. लेकिन विल्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आई उस वक्त. इनफैक्ट विल्सन वॉज वेरी प्लीज्ड एट फर्स्ट. स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी प्लीज्ड, ही वॉज हैप्पी. I went home feeling very happy, but that evening I began to think again. Copying from a book is a strange work for a man to do. So Watson also agreed, very strange, yes. So Wilson ने कहा कि पहले तो starting में he was quite happy that he is going to earn £4 a week and he doesn't have to do much and he just have to sit for 4 hours and just copy the book. But in the evening he again began to think that copying a book is quite strange work, right? Nobody asked to do that, and Watson also agrees on that. But anyhow, Wilson decided to go for the job. So the next morning, I went to Pope's Court with my pen and some paper. Mr. Ross was there, but he soon went away and I began my work. I went in every morning at 10 a.m. and went home at 2. And on Saturday, Mr. Ross gave me my £4. So from next day onwards, Mr. Wilson started the job. He would go to that place at the Pope's Court, the office of League, Red-Headed League, in the morning 10 o'clock and went home at 2 o'clock. And on each Saturday, मतलब पूरा वीक काम करने के बाद सैटरडे को मिस्टर रॉस जो है वो £4 दे देते थे. And as soon as Mr. Wilson reaches the office, जो मिस्टर रॉस थे ही यूज टू लीव द ऑफिस. ठीक है, वो चले जाते थे वहाँ से और मिस्टर विल्सन जो थे वहाँ बैठ के अपना काम करते थे. सो होम्स आस्क्ड, हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क देयर? विल्सन सेड, 8 weeks, but today I went to the office at 10 o'clock and the door was locked. He takes a paper out from his coat and gives it to Holmes. So विल्सन ने क्या कहा कि it has been 8 weeks I have been working there. But today when I went to that office, the door was locked. मतलब दरवाज़ा बंद था. And he takes out one paper which was in his pocket and he gave it to the Holmes. And he said कि ये वाला पेपर वहाँ पे दरवाजे पर लगा हुआ था और उसमें क्या लिखा हुआ था? The Red-Headed League is finished. 21 June 1890. Okay. So Red-Headed League जो थी जिसके लिए ऑफिस खुली गई थी वो बंद हो गई है अभी. It is over. So Holmes ने उसको पूछा, then what did you do? So Wilson said, I went to the office in the next building and I asked the man what happened to the Red-Headed League. He said he was not familiar with Mr. Ross or the League. Instead, he told me that a Mr. William Morris, a solicitor, had rented the room until yesterday and had moved out. I asked about a forwarding address and when told, I went directly and found it to be a vacant lot. So ये जो उसको पेपर मिला, right? After reading that, Holmes ने उसको पूछा, then what did you do after getting that paper? So Wilson said that he went to the next building. जहाँ पे दूसरी बिल्डिंग होगी वहाँ के ऑफिस में गए और वहाँ जाके एक आदमी से पूछा कि do you know what happened to that red-headed league? Where is that person? The office is closed. तो उसने कहा कि he is not at all familiar with Mr. Ross. Familiar मतलब he doesn't know him. He is not at all known to that person named Mr.
रॉस, और ना ही उसको लीग के बारे में कुछ पता है. ही डजंट इवन नो एनीथिंग अबाउट दैट रेड हेडेड लीग. एंड इंस्टेड ऑफ दैट, मतलब उन दोनों चीज़ों के बारे में तो उसे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसने कुछ और ही चीज़ बताई. क्या बताई उसने? कि अ विलियम मॉरिस, अ पर्सन नेम्ड विलियम मॉरिस हु इज़ अ सॉलिसिटर, दैट मीन्स अ लॉयर, हैड रेंटेड दैट रूम. मतलब जो लीग की ऑफिस थी, राइट, वो किसने रेंट पर ली थी? विलियम मॉरिस ने. नॉट मिस्टर डंकन रॉस, दैट वॉज मिस्टर विलियम मॉरिस. ये उसने बताया था वो आदमी को. ठीक है, उसको ये चीज़ पता थी कि ये जो रूम था, जो अभी तक रेड हेडेड लीग की ऑफिस हुआ करती थी, वो किसने ले रखी थी उसके हिसाब से? एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर विलियम मॉरिस एंड ही इज़ अ सॉलिसिटर. यहाँ पर ही थे अंटिल यस्टरडे, बट नाउ ही हैज़ मूव्ड आउट. एंड दैट्स द रीज़न विल्सन ने उसको फॉरवर्डिंग एड्रेस पूछा. एंड उसने जब फॉरवर्डिंग एड्रेस बताया, विल्सन वेंट ओवर देयर, बट दैट प्लेस वॉज वेकेंट. दैट मीन्स दैट प्लेस वॉज एम्प्टी. So Holmes asked, "You did not find a Mr. William Morris or a Mr. Duncan Ross, am I right?" So Wilson said, "You are. The whole affair was very strange, and I thought perhaps you could shed some light on the matter." So Holmes was very clever detective, right? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, he was a very clever detective. सिर्फ उसके कपड़े देखकर और उसको ही ऑब्जर्व करके उसका पता चल गया था कि ही वेंट टू चाइना एंड ही इज़ बीन डूइंग अ राइटिंग वर्क, राइट. सो वैसे ही पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद ही ऑलमोस्ट हैड द आंसर विथ हिम, लेकिन श्योर करने के लिए और कुछ चीज़ें थी जो उसको समझ में नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ें देखनी थी उसको. लेकिन अभी उसको सुन के इतना समझ में आ गया था कि मिस्टर विलियम मॉरिस या मिस्टर डंकन रॉस बोथ वर अ imposter, you can say, right? A person who cheats somebody. So they both were imposter. So Wilson ने कहा, yes you are. He did not find any of them. वो जो forwarding address था वो totally vacant था, वहाँ पे उसको कोई नहीं मिला, ना ही मॉरिस मिला और ना ही रॉस मिला. So Wilson said कि this whole affair is quite strange. Now Wilson did not understand that thing in the beginning, कि क्या हुआ. स्टार्टिंग में उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब उसको लग रहा है कि कुछ तो स्ट्रेंज है, कुछ तो वियर्ड है. एंड दैट्स वाई ही केम टू होम्स एंड ही थॉट दैट ही माइट बी एबल टू मेक दिस सिचुएशन क्लियर, शेड सम लाइट. दैट मीन्स ही माइट बी एबल टू मेक दिस मैटर क्लियर, राइट. इसीलिए वो उनके पास आए थे. सो होम्स, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, वेयर इज विंसेंट स्पॉल्डिंग नाउ? So Wilson said, he is at the shop. So Holmes ने कहा, that is all Mr. Wilson. Today is Saturday. I am going to have an answer for you before Monday. So Holmes ने उनको कहा, okay, whatever you told me, that is enough for me. I would give you the result, or I would give you the solution for your problem by Monday. So Wilson said, thank you Mr. Holmes, and he leaves. And then Holmes asked Watson that we must work quickly, Watson. We are going to Saxe Coburg Square राइट नाउ. सो होम्स ने डिसाइड किया कि वो लोग अभी वो स्ट्रीट पर जा रहे हैं, सेक्स कोबर्ग स्क्वायर, जहाँ पर मिस्टर विल्सन की शॉप है. ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू आर क्लियर विद द फर्स्ट सीन. सो स्टूडेंट्स, वी वुड बी डूइंग द नेक्स्ट सीन इन द नेक्स्ट वीडियो. I was about to do scene 2 today, but I don't think I would be able to do it right now. So we would be seeing the next scenes in the next class. Take care and see you soon.